So if we just check out the questions which are related to Python and society law and ethics from this question paper. So जो पहला आपके पास question है, that's about computer viruses, that's related to computer network. Okay, now second question. Fill in the blank. Which command is used to show a chart? 4 options are given. So tell me which is the correct answer. Second option, show. Second option, that is show. B, yes. So plt dot show we write at the last so that वो आपके graph को show कर सके. So second option is the correct answer for this. Now fourth question says, given a panda series called sequences, the command which will display the last 7 rows is dash. Yes, First last 7 option. rows. Yes, it is the first option. Sequences is name of your series. Dot tail. So इसमें हमें क्या देखना है? Tail 2 जगह पे है. Tail small में होना चाहिए and bracket में we will give 7 because we want to show the 7 rows from there. So it's tail 7. That's correct. Okay, what will be the result of Good evening, this? ma'am. Good evening, Sresht. What will be the result of this one? जो आपके पास question screen पे है. You have S1, you have S2. And it is asked what will be the result of S1 minus S2. Ma'am, 0, 9, 1 nan, 2, 18, 3 nan, 4, 21, 5 nan, 6 nan. Very Yes, good. ma'am. So 0 पे आएगा 9, since इसमें nan है तो हम इसको 9.0 कर देंगे. 1 पे matching index नहीं है, so it should be nan. 2 पे matching index है, so 20 minus 2 is 18, but we'll show 18.0. Then 3 पे matching index नहीं है, इसलिए वो होगा nan. 4 पे matching index है, so 25 minus 4 will be 21. 5, we don't have a matching index, so it will be nan. 6, we don't have a matching index, so it will be nan. And the D type will be float 64. So this is how you have to write down the output. तो आपको जो output है वो proper ऐसे लिखना है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 index होंगे, ये हमारी values हैं. एक भी value अगर nan हो जाती है तो overall value जो है उसको हम float में mention करते हैं. So it will be mentioned in floats. ठीक है. So ये तो हो गया आपका इसका output. Statement import pyplot.matplotlib is a valid statement for working with chart functions. Question number 6. False. क्या होनी चाहिए हमारे पास statement? Import matplotlib.pyplot. So it should be import matplotlib.pyplot. तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है. उन्होंने लिखा है import pyplot.matplotlib. It is false, Suman. matplotlib.pyplot होता है ना. यहाँ पे लिखा है pyplot.matplotlib. So it's not that. So it should be false. Full form of BCC in the context of email is? Blind carbon copy. Very good. So it means कि हम जिसको email भेज रहे हैं, अगर हम multiple users को भेज रहे हैं, एक का address 2 में है, एक का address BCC में है, so they will not get to know that the mail has been sent to each other. So exclusive email आपकी जाती है, that's BCC. The access1 identifies a data frame's what? Rows, column, value or data type? Columns. Is she right? Yes, बताइए सही आंसर है columns या कुछ और होना चाहिए? Yes, it is B columns. So access 0 होता है rows के लिए और access 1 होता है columns के लिए. ठीक है? So access 0 is for rows, access 1 is for columns. Okay. Next आपके पास है for web pages where the information is changed frequently. For example, stock prices,
weather information. Which of the following website we will be having, static or dynamic? The web pages which keep changing the data frequently, which kind of website will be used? Dynamic web Ma'am, page. dynamic. Dynamic website. Dash refers to information about you or created by you that exist in digital form, either online or on an electric storage device. Question Digital number 12. footprint. So it is from societal impact, and the answer is digital footprint. So digital footprint refers to any information about you or created by you that exists in digital form. Okay. Question number 13. Dash refers to any information about you or created by you. Cookies भी हो सकता है. So इसमें आपको मिलने चाहिए. ऑनलाइन नहीं होता ना, लेकिन कुकीज तो ब्राउजर उसके सिस्टम पे होता है. तो डिजिटल फुटप्रिंट विल बी अ बेटर आंसर, सुमन, इन दिस. Because cookies are not created and stored online. Cookies are stored on the client machine. So वो आपके कंप्यूटर पे ही होती है, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट आपके कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं, ऑनलाइन कहीं और भी हो सकते हैं. सो डिजिटल फुटप्रिंट इज अ बेटर आंसर. In pandas, dash function will return the total number of rows in a data frame. आपके डेटा फ्रेम में Size. रोज कितनी है? साइज. Ma'am, count. Count, yes. So we Afternoon, have a ma'am. function. Good afternoon, Dhruv. So we have a function called count. एक तो पहली बात function पूछा है, ठीक है? साइज एट्रीब्यूट होता है, और जो साइज है वो आपको नंबर ऑफ रोज नहीं बताता. अगर मेरे पास एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर ऐसा कुछ डेटा है, कुछ कुछ वैल्यूज है यहाँ पे, तो अगर आप df डॉट साइज लिखोगे तो आपको 9 देगा, बिकॉज इन टोटल वी हैव 9 वैल्यूज इन दिस, 9 है ना? values. तो अगर आपको सिर्फ रोज चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो लिख सकते हो df डॉट शेप. शेप देता है मुझे 0, मतलब शेप देता है रोज कॉमा कॉलम की फॉर्म में, तो शेप 0 लिख सकते हैं हम. और द बेस्ट आंसर इज df डॉट काउंट. सो df डॉट काउंट जो है, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ रोज इन द डेटा फ्रेम. सो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, दैट शुड बी df डॉट काउंट, बिकॉज फंक्शन पूछा है उन्होंने. ठीक है. Question 14. I can keep you signed in. I can remember your site preferences. I can give you locally relevant content. Who am I? बताओ. Question number 14. Ma'am, Yes. cookies. इसका आंसर है cookies. अच्छे. Okay. Question number 17. Societal impact से है. According to a survey, one of the major Asian countries generates approximately about 2 million tons of electric waste per year. Only 1.5% of the total e-waste gets recycled. Suggest a method to manage the e-waste. Ma'am, proper dedicated grounds to act as e-waste dumping grounds. Okay. Yes. Any other suggestions? 3 R's, उसमें से recycle तो उन्होंने बोल ही दिया है. That is, what are the 3 R's for managing e-waste? Reduce, Reduce, reuse. reuse, recycle. So we should reduce the consumption of electronic gadgets. जितनी जरूरत हो उतनी ही gadgets लेने चाहिए. So that जितनी consumption कम होगी उतना waste कम होगा. So reduce, then is reuse. So refurbished elements को हम use कर सकते हैं. Second hand devices अपने भी बेच सकते हैं, दूसरों से ले भी सकते हैं if required. And third is obviously recycling. Then you can give examples like many companies are using the e-waste
in creating the new products. iPhone is one of the major examples of that. तो आप वो भी लिख सकते हो इसमें. ठीक है. Question 21 is also from Societal. What is the name of the IT law that India is having in the Indian legislature? What is the exact name out of this? Ma'am, third option. Yes, India's Information Technology Act, जिसे हम IT Act कहते हैं, that was made in year 2000. नहीं, India's Technology नहीं है सुमन, it's Information Technology Act है, पर उन्होंने India's थर्ड वाले में साथ में जोड़ दिया तो it is okay. But otherwise IT Act की full form जो है वो है Information Technology Act. So option 3 is the correct answer out of the given options. Right? Question number 22. Consider the following data frame DF as follows. Write the code to create the above data frame in Python. So आप data frame code तो लिख ही सकते हो. You have practiced a number of times. What is the easiest way to code for the data frame? Ma'am, through dictionary. Through dictionary of list you can create, or you can And create then we through can list of lists. at the end we have to do df.index. ठीक है, अब आप मुझे चैट में लिख के दिखाओ क्या कोड होगा इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का. Write down the answer in the chat. Write the answer in the chat. किसने भेजा चैट में अभी तक? Nobody has sent. Swaraj, am I audible now? Swaraj is not connected. Okay. What time लगा दिया आप लोगों ने आंसर लिखने में? Anybody who has completed? Ma'am, I have written. S is equal to name, ठीक है, ठीक है, ठीक है. D is equal to data frame, and after that we will change the index. Very good. ठीक है. So this is the answer. Good. Okay. What will be the output produced by following statements?
print df dot at t3 total, df dot at t1 ip. From the above data frame, what will be produced by the following statement? df dot at t3 total, what will be printed? Add क्या करता है? It gives you the result from a specific position in the data frame. And we are telling the position with the help of row index and the column index. So what will you get Yes, ma'am. if you write df dot at t3 total? 241. 241. Yes. And df dot at t1 ip? 98. So option 2 is the correct answer. Good, Suman. So second option is the correct answer. Very good, Suresh. So 241, 98. So second option is the correct answer in this. Okay. I hope it's clear to rest of you as well. Third question इसमें पूछा है, what will be the output produced by the following statements? Print df dot log t2 colon t3 ip colon geo. अब देखो ये जो पूछा है इसके लिए आपको डेटा फ्रेम देखने की भी जरूरत नहीं है, आप आउटपुट्स में से देख Yes, के ma'am. गेस कर सकते हो कौन सा आउटपुट सही है. First option. ठीक है, सो वेरी क्लियरली द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो T2 से T3 तक जा रहा है, मतलब T2 भी शो होगा, T3 भी शो होगा. सो ऑप्शन 2 और 3 तो यहीं पे रूल आउट हो गए, बिकॉज उसमें T3 शो ही नहीं हो रहा है. देन आपको आईपी से लेके जियो तक के कॉलम्स दिखाने हैं, मतलब आईपी भी शो होगा, जियो भी शो होगा. सो फोर्थ में सिर्फ आईपी शो हो रहा है, इट शुड शो बोथ. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब आप यूजर डिफाइंड इंडेक्स देते हो तो अपर लिमिट इंक्लूसिव होती है, तो ये T2 T3 को शो करेगा एंड आईपी और जियो दोनों को शो करेगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन 1 है वो सही आंसर है इसमें. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. What will be the output produced by the following statements? df dot I at 2 comma 1, df dot I at 1 comma 2. इसके लिए आपको देखना पड़ेगा डेटा फ्रेम, मैं शो कर देती हूँ, आप कमांड देख लो अच्छे से. So it is I at 2 1 and then I at 1 2. This is your data frame. So पहले वाले में I at में 2 1 है, दूसरे वाले में 1 2 है. Done? 2 1 and then 1 2. Ma'am, T2 खुशाग्र. नहीं, देखो आपके पास जब आप इंडेक्स देते हो, ठीक है, एनीवन एल्स हु हैज अ डिफरेंट आंसर? बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो इंडेक्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 1 2 3. सिमिलर वे फॉर द कॉलम्स. सो रोज का जो पोजिशनल इंडेक्स है वो है 0 1 2 3. कॉलम्स का भी जो पोजिशनल इंडेक्स है वो है 0 1 2 0 1 2 3 4. ठीक है, अब उसने लिखा 2,1. 2,1 मतलब आपकी रो कौन सी हो गई? प्रखर वाली. सो 2,1 रो 2 इज प्रखर वाली रो और 1 कॉलम, तो 0 कॉलम नेम है, 1 कॉलम इंग्लिश है. दैट मीन्स इट विल फेच 69 आउट ऑफ दिस. So 69 is fetched by the first command. Then we have 1 comma 2. 1 का मतलब नरेश वाली रो और 2 का मतलब है 85 value. So it will be fetching 69 and 85. So it will be fetching 69 and 85. 2 comma 1, 1 comma 2. तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा. Are you getting it? ये आई एट है ना, आई एट मतलब Yes, पोजिशनल ma'am. इंडेक्स देंगे हम यहाँ पे. जो पोजिशनल इंडेक्स है वो 0 से शुरू होते हैं. सो सिंस पोजिशनल इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो 2,1 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम. सो थर्ड रो आपकी T3 वाली है प्रखर की, उसमें सेकंड कॉलम इंग्लिश वाला है, दैट इज 69. एंड 1,2 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम. सो सेकंड रो इज T2 एंड थर्ड रो इज IP विच इज 85. तो आपके आउटपुट में आएगा 69 85. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन.
Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Deepanjali, is it clear? Yes, ma'am. Dhruv? Okay. Fifth question है, what will be the output produced by the following statements? अब यहाँ पे लिखा है print df.ilog, मतलब again positional index देने हैं ::2 and 0::4। अब मुझे बताओ ::2 का क्या मतलब है? ये पहला वाला रोज का इंडेक्स है, दूसरा वाला कॉलम्स का है। सो ::2 क्या करेगा? Ma'am, all elements will be selected with a step of 2. All the rows will be selected with a gap of 2. That means if I start from T1, so अगली जो रो होगी वो T3 होगी, T2 skip हो जाएगा, T4 skip हो जाएगा। सो आंसर तो यहीं से ही पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके पास T1 T3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही है, राइट? सो आपके पास ::2 का मतलब है कि स्टार्ट इज मिसिंग, तो स्टार्ट मिसिंग होने का मतलब है फर्स्ट रो से शुरू करना है, 0 से, एंड स्टेप है 2 का, तो 0 और 2 इंडेक्स वाली रो दिखाई देगी विच इज T1 एंड T3। बाकी ये 0::4 का मतलब क्या है कि आपके पास 0 इंडेक्स वाला शो होगा कॉलम, और फिर स्टेप 4 है, मतलब 0 इंडेक्स वाला और फिर सीधा 4 इंडेक्स वाला। तो 0 इंडेक्स वाला नेम था और 4 इंडेक्स वाला आपका टोटल है। सब में ही नेम और टोटल आ रहा है, तो उसमें तो वैसे ही इशू नहीं है, आपको सिर्फ रोज ही फाइंड आउट करनी थी। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दिस। फाइन? Ma'am, यस। in the question we have, ma'am, we also have T2, T4. Here also there is a jump of 2. So But how we we are knew this starting is from incorrect? 0, na? We are starting from index 0. Since start is not missing, start is missing, it is not given. So by default, start is taken as 0. तो अगर हम start 0 index ले रहे हैं, that means your first row. 0 plus 2 means Huh. your index 2, that's your third row. Then 2 plus 2 will be fifth row. Fifth row हमारे पास है ही नहीं. That's why we are having only row 1 and row 3. Yes, ma'am, understood, ma'am. So if we would have been starting with index 1, तो फिर T2 T4 आता, पर हम index 0 से शुरू कर रहे हैं, that's why it is T1 T3, right? Y- Yes, ma'am. Okay. Now we have this question 24. Consider a given series S1. Write a program in Python pandas to create the series. So this is like very easy question and बहुत आराम से आपको ये marks मिल सकते हैं, क्योंकि series create करना सबसे आसान काम है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, import pandas as pd, and then you can take a list जिसमें आप ले सकते हो 5000, 6000, 8000 and 5500. Then simply create S1 is equal to pd dot series. Make sure series का S capital होना चाहिए. Bracket में आप अपनी list दे दोगे. And you have to give the index. So comma index is equal to list की form में UP, MP, Gujarat, Delhi लिख देंगे. That's it. The series is created. So ये तो सब बना लेंगे. Shall I write the code? Or you're No, clear with ma'am. this? Anyone who Clear, ma'am. wants me to write the code for this? Suman, Dhruv, Dipanjali, Yes, ma'am. clear है ये? Yes, ma'am. Okay. Moving ahead. This question number 27. Consider the following series object S. Write the command which will display the name of the items having rate greater than 1000. Write it in the chat. Answer लिखो chat में क्या होगा. Write the command which will display the name of the items having rate greater than 1000. Name of your series is S. So what should be the answer? Return, ma'am. S and then S greater than, ठीक है. So आपको जब ये पूरी कमांड बोली जाती है तो आप इसके साथ प्रिंट भी लिख सकते हो. So to be on safer side, we can write print S, S greater than
1000, then round bracket close. So we can write it like this so that you don't get any chance to lose the marks. Then वो जो name change करने के लिए बोल रहा है, that is a logical name. So logical name में क्या कह रहा है? Write the command to name the series as item. तो आप क्या कर सकते हो? S dot name is equal to item. So that will change the name of the series to item. Okay. Ma'am, if we try to execute the command as, since this series initially existed as capital S, so Hmm. capital S is equal to pd dot series item. Huh. Ma'am, then will it be renamed as item? No, no, no. No, with that it will not be renamed. So this is a logical name. Yes, ma'am. This is not the name which we are using in coding. So this is a logical name only for the internal purposes. We have named it as item. Otherwise, object name will still remain S. So if you Yes, have ma'am, to perform understood. an operation on the series, you will be performing with S only, not with the name item. Yes, ma'am. Okay. Now you have this data frame and they've asked you to write a command to add a new column activity to the data frame. तो आपको एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम होना चाहिए एक्टिविटी. उसमें आप कुछ भी एक्टिविटी डाल सकते हो लाइक चेस, लूडो, बस बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एनीथिंग लाइक दैट. So how will you add a new column? Name of the data frame is class frame. So consider the following data frame class frame. Very good, Suman. So हम लिखेंगे data frame का नाम जो कि है class frame. Square brackets में column का नाम which is activity. So column का नाम double quotes में आएगा. So square bracket double quotes के अंदर activity is equal to, आगे के स्क्वायर ब्रैकेट में आप एक्टिविटीज के नाम लिखोगे. 4 स्टूडेंट्स हैं आपके पास तो आपको 4 एक्टिविटीज लिखनी होंगी. सो डबल कोट्स में यू कैन राइट लाइक स्पोर्ट्स कॉमा ड्राइंग कॉमा समथिंग समथिंग समथिंग. So 4 activities you have to write in the list to create the column since we have 4 students in this. ठीक है? How can you add a new row with the given values? सेकंड का आंसर क्या होगा? log हाँ, हाँ, लॉग पूरी लाइन क्या लिखोगे? tf dot sorry class frame dot log हाँ, is equal to सीधा क्लास फ्रेम डॉट लॉक इज इक्वल टू. no, no, क्या होगा सुमन आंसर इसका? class frame dot log square bracket में 5 ST5. square bracket close is equal हम्म. to square bracket में सारी values जो हमें डालनी. सो पहले आपके डेटा फ्रेम का नाम आ जाएगा दैट इज क्लास फ्रेम स्क्वायर डॉट लॉग. डॉट लॉग के पास स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगी उसमें आप अपना रो इंडेक्स दोगे कोट्स के अंदर इज इक्वल टू और फिर जो भी आपके पास वैल्यूज थी वो एक एक करके आप यहाँ पर दे दोगे वट एवर वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन. सो दोज वैल्यूज विल बी रिटन ओवर हियर. ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे दे देंगे. सो दैट्स हाउ यू ऐड अ रो. तो कॉलम तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है लेकिन रो आपको ऐड करनी पड़ती है लॉग से. सो आप क्लास फ्रेम दैट इज डेटा फ्रेम का नाम लिखोगे डॉट लॉग. In square brackets, you will write the row index and then the values. Okay. List any 2 health hazards related to excessive use of technology. Question 32. 2 health hazards. ये भी ठीक है सुमन. That is also correct. और उसका इंडेक्स 4 आ जाएगा instead of ST5. हाँ जी बताइए. 2 health hazards related to eye strain. ठीक है और Ma'am, headache, migraine, and headache, lower back tension. back pain, irregular sleep. So those can be the
health hazards because of the excessive use of technology. ठीक है. Hello. Lina is using her internet connection to book a flight ticket. This is a classic example of leaving a trail of web activities carried by her. What do we call this type of activity? What is the risk involved by such kind of activity? Question number 33. Ma'am, this activity is digital footprint, and it is risky because it usually deals with the sensitive information regarding the users, and if an unauthorized person gets access to this information, he or she can use it for their own personal gain. Personal gain. So it is digital footprint. Your personal details are being recorded somewhere, and if they use it for the like in an inappropriate way, it can be harmful. ठीक है. Question number 34. Consider two objects, X and Y. X is a list, whereas Y is a series. Both have values 2, 4, 9, 10. What will be the output of the following two statements, considering that the above two objects have been already created? तो X आपके पास क्या है? लिस्ट है. Y आपके पास सीरीज है. दोनों की वैल्यूज 2492 है. आपको बताना है प्रिंट x इंटू 2 से क्या प्रिंट होगा, प्रिंट y इंटू 2 से क्या प्रिंट होगा, एंड यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर. Ma'am, x is into 2. Since we are multiplying the list into 2, it will be concatenated. और And बेटर ma'am, वर्ड the इज इट विल बी series, रेप्लिकेटेड. yes, ma'am, हम्म. replicated, and the two lists will be merged. तो आंसर क्या आएगा अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी? प्रिंट x क्रॉस 2, व्हाट विल इट प्रिंट? Ma'am, let's say if we assume the list of x to be ABC, and we do वी हैव द ABC वैल्यूज start to it would, प्रिंट. Values are okay, given ma'am, in the 2 4, question. 2, 4, 9, 10. ma'am, it would come 2 4 9 10 2 4 9 10. Very good. Suman has also written the answer in the chat. That's good. So it will be 2, 4, 9, 10, 2, 4, 9, 10. Values will be repeated ट्वाइस, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर 3 से हो रहा होता तो 3 बार आ जाती. सो जब लिस्ट को आप मल्टीप्लाई करते हो एक नंबर से, उतनी बार आपकी वैल्यूज रिपीट हो जाती है. सो ये आपको क्या देगा? 2, 4, 9, 10 और फिर से 2, 4, 9, 10. What will happen if I write print y into 2? इसका क्या आंसर होगा? Ma'am, each element will be individually multiplied to 2, and it would become 4 8 18 20. And it will be printed as a series. तो आपके पास vertically print होगा, 0 इंडेक्स पे 4, Yes, 1 इंडेक्स पे 8, 2 इंडेक्स पे 18 and 3 इंडेक्स पे 20. नीचे D type in 64. So justification वही है कि आपके पास लिस्ट जो है वो रेप्लिकेट होती है और सीरीज जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर multiplied. So that's why the difference of output is there. What do you mean by plagiarism? Explain with help of an example. Shresh नहीं बताएगा. Anyone else? What do you mean by plagiarism? Explain with the help of an example. मैम किसी को भी ऐसे लिंक प्रोवाइड करना और उसके अंदर उन्हें कैप्चर कर लेना, दैट इज नोन That is एज phishing. प्लेगरिज्म। अच्छा हाँ। Plagiarism क्या होता है? राम राम मैम जी। Ram Ram ji, how are you? मैं मैम ये बढ़िया। No हैकिंग का idea. पार्ट होता है। नहीं बेटा, प्लेजरिज्म तो बहुत सिंपल सा साइबर क्राइम है. प्लेजरिज्म होता है कि किसी के डेटा को चोरी करके अपनी प्रेजेंटेशन में दे देना और कहना कि मैंने बनाया है. लाइक आई आस्क यू टू सबमिट अ मैम वही प्रोजेक्ट सेम। और आप नेट से प्रोजेक्ट डाउनलोड करके सबमिट कर दो और कहो कि दिस इज क्रिएटेड बाय मी. दैट इज प्लेजरिज्म. सो प्लेजरिज्म इज कॉपिंग समवन एल्स रिसर्च वर्क, कॉपिंग समवन एल्स डेटा and presenting it as yours without giving the credit to that person. That is called plagiarism. तो अगर आप कभी कहीं से कोई डेटा कॉपी करते हो, उसको पढ़ो, लेकिन उसको अपने वर्ड्स में रीफ्रेज करके रिप्रेजेंट करो. तो आपने अगर एक पैराग्राफ पढ़ा है ऑन साइबर क्राइम और मैंने आपको बोला है कि राइट एन एसे ऑन साइबर क्राइम. सो इफ यू आर राइटिंग एन एसे ऑन साइबर क्राइम, आपके पास दो ऑप्शन है. आप गूगल पे जाके लिखो एसे ऑन साइबर क्राइम, जो लिखा हुआ आया आपने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, मुझे सबमिट कर दिया. दैट इज प्लेजरिज्म. लेकिन अगर आपने वहां से उसको पढ़ा, उसको समझा और उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, दैट्स नॉट प्लेजरिज्म. दूसरी चीज, अगर हम कभी कहीं से कोई पैराग्राफ लेते भी हैं या कोई डायग्राम लेते हैं, तो वी शुड गिव अ क्रेडिट.
that this picture is taken or this table of data is taken from so and so website, yeah, from so and so blog, whatever. So you should always give a reference or credit to the person from where you are using that data. Second, हमेशा उसको rephrase करो ताकि plagiarism ना हो. Exact copy करके दे देना और कहना कि आपने किया है, that is plagiarism. ठीक है. सो ये ऐसा साइबर क्राइम नहीं है जिसके लिए आपको जेल हो जाएगी, बट यस, आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लग सकते, आपको असाइनमेंट दोबारा बनानी पड़ सकती है. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी देयर. सो दैट इज प्लेजरिज्म, कि किसी और के डेटा को अपना कह के प्रेजेंट करना. ठीक है. What do you understand by net etiquettes? Explain any two such net etiquettes. Yes, any one of you? Net etiquettes. मैम ये 11th में पढ़ा था। मैम इट्स अ वे ऑफ यूजिंग एनी इंटरनेट और मतलब It is the तरीके से यूज basic करना. etiquettes or the basic हाँ manners which you should follow while working on internet. इसलिए उनको इंटरनेट. net etiquettes कहते हैं. Example? मैम नो अनयूजुअल कमेंट्स ऑन एनी अदर उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं और be polite. हाँ, so be polite means be polite in the communication over the internet. Don't write, the comments which can harm someone's sentiments. Then be specific, be authentic, और मैम डोंट ट्रोलिंग ना शेयर द करो. जो ओटीपी। वो तो आपकी सेफ्टी के लिए ना, ये तो एटिकेट्स है. दिस इज अबाउट मैनर्स. तो ओटीपी शेयर करके तो हम खुद खतरे में पड़ जाएंगे, वो मैनर्स नहीं है. तो मैनर्स में ये है कि आपको पोलाइटली हर किसी से बात करनी चाहिए नेट पे, दूसरे के टाइम की वैल्यू करनी चाहिए. और जो ये सो कॉल्ड व्हाट्सएप और ये सारे मैसेजेस आते हैं, यू शुड नॉट फॉरवर्ड देम एज इट इज. यू शुड नो देयर ऑथेंटिसिटी. यू शुड नो कि वो सही है या नहीं है. अकॉर्डिंगली यू शुड सेंड अ मैसेज, अदरवाइज यू शुड नॉट डू दैट. ठीक है. सो बी ऑथेंटिक, बी पोलाइट, बी ओरिजिनल. अपने कंटेंट को ओरिजिनल रखो. डोंट यूज प्लेजरिज्म एंड ऑल. सो दोज आर फ्यू ऑफ द net etiquettes we should follow. Consider the following graph, write the code to plot it. बस इतना सा क्वेश्चन है, देखो. ठीक है. इसके बाद चॉइस है. ये आपको फिगर दे दिया, अब बोला है कि इसका कोड लिखो. तो अब इसका कोड हम कैसे लिखेंगे? कैन यू सी इसमें? पहले तो बताओ कौन सा चार्ट बन रहा है यहाँ पे? line chart. लाइन मैम चार्ट. विच लीनियर। फंक्शन इज यूज टू डेट क्रिएट ऑफ अ लाइन बर्थ. चार्ट? हाँ. Ma'am, line chart is created by default. हाँ, तो प्लॉट मेथड से यूज होगा ना. तो सबसे पहली लाइन तो आप क्या Yes, लिखोगे? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज लाइज. तो कुछ भी दे सकते हैं, पर लेट्स से हमने पीएलटी लिया. अब आप देखो एक्स एक्सिस पे जो लिस्ट है उसमें क्या वैल्यूज है? 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. यही है ना? इज इट विजिबल? एक्स एक्सिस पे जो लिखा हुआ है वो विजिबल है आपको? yes, ma'am. और ऐसे ही वाई एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो क्या है? 1, 2, 1 to 3, 4, 6. 5, 6. तो मैंने वही ले ली वैल्यूज. तो एक लिस्ट ले ली एक्स. एक्स में जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ रही है वो लिख ली. एक लिस्ट ले ली वाई और उसमें वाई एक्सिस वाली वैल्यूज लिख ली. नाउ आई जस्ट नीड टू राइट plt डॉट प्लॉट. plt डॉट प्लॉट, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस. कलर बाय डिफॉल्ट यही आता है, तो मुझे कलर लिखने की जरूरत नहीं है. इस चार्ट में ना तो कोई टाइटल दिया हुआ है, ना ही एक्स एक्सिस पे लेबल है, ना ही वाई एक्सिस पे लेबल है. अगर टाइटल होता तो आप plt डॉट टाइटल लिखते या plt डॉट एक्स लेबल वाई लेबल लिखते, बट नथिंग इज देयर. सो फाइनली आई हैव टू शो इट, सो आई राइट plt डॉट शो. दैट्स इट. बस इतना सा कोड लिखना है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. दैट्स इट. So import matplotlib.pyplot as plt. X लिया, Y लिया, प्लॉट किया, शो कर दिया. क्लियर? Ma'am, इज इट क्लियर? if we write y or if we interchange x or y, तो then उल्टा will हो it जाएगा lead ना. to any error? यस, यू विल नॉट गेट द मार्क्स. एंड दूसरा एरर ये हो Ma'am, जाएगा not कि in 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इधर आ जाएगा. yes, एरर ma'am. नहीं आएगा, Ma'am, बट द ग्राफ वुड बी not in डिफरेंट. plot. Ma'am, not interchanging in plot, interchanging above the plot. Writing x comma y only in plot, but y नहीं before नहीं, and डज x नॉट मैटर. after. That does not matter. You can define whichever one you want to define first. बस यूज होने से पहले डिफाइंड होने चाहिए. इस ऑर्डर में डिफाइन किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Yes, ma'am. You can even define x and y before the import statement also. तब भी चल जाएगा. ठीक है.
अब इसमें सेकेंड ऑप्शन है ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच. सो एज वी कैन सी कि इसके एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, 7, 8, 9, 10. तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो इंपोर्ट तो आप लिखोगे ही लिखोगे. इंपोर्ट के बाद आपको लिस्ट में क्या लेना होगा, 7, 8, 9, 10, राइट. एंड वाई में आपको क्या चाहिए वो हम अब यहाँ से देख के गेस कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट सेवेंथ में अराउंड 40 है, तो फर्स्ट वैल्यू में 40 ले लेती हूँ. जो एट्थ है वो 40 से भी ऊपर जा रहा है, तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 50 आई गेस. फिर जो नाइन्थ है, दिस इज बिटवीन 30 एंड 40, सो इट शुड बी 35. एंड अच्छा ये भी 50 नहीं जा रहा, 30, 10 10 का गैप है ना, तो दिस वुड बी अराउंड 45. 35 और फिर जो लास्ट वाला है वो 45 से थोड़ा नीचे है, लेकिन 40 से ऊपर है, तो आप उसको 43 या 44 लिख सकते हो. इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, अप्रोक्सीमेटली आपकी सही वैल्यू होनी चाहिए. विच फंक्शन इज यूज टू मेक अ बार ग्राफ? बार. Which function is used to make a bar graph? It should be plt dot bar. So आपको कलर भी चेंज नहीं करना है, सबका कलर सेम ही है, वही रहेगा. So it will be plt dot bar x comma y. So this will create your bar chart looking like this. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, so we have SQL question. Okay, this is the question again for data frame. Write a program in Python pandas to create coming. Wait. Write a program in Python pandas to create the following data frame batsmen from a dictionary. So perform the following operations on the data frame. पहला question है add both the scores of a batsman and assign it to the column total. What should be the statement? और इसमें पहले ये भी है write a program in Python pandas to create the following data frame. वो तो आप बना लोगे, बट पेपर में ध्यान से चेक करना कि ये लिखा हुआ है या नहीं. कई बार होता है कि आप ऊपर की लाइन नहीं पढ़ते हो, आपको लगता है सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस ही पूछे, बट द क्वेश्चन इंक्लूड्स दिस आल्सो. राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन pandas टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम बैट्समैन. तो पहले आपको डेटा फ्रेम बनाना है, उसके बाद आपको इन तीनों के आंसर्स करने हैं. तो पहला क्वेश्चन है add both the scores of a batsman and assign it to the column total. So what will be the command? मैम Ma'am, सम batsman और square. Any one of you answer? Abhishek? Dhruv? मैम कोई आंसर? सम करके टोटल ऐड करेंगे, हाँ. आपके डेटा फ्रेम का नाम है बैट्समैन, तो आप क्या लिखोगे, बैट्समैन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, डबल कोट्स के अंदर नए कॉलम का नाम. नए कॉलम का नाम क्या चाहिए, टोटल. सो बैट्समैन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर टोटल इज इक्वल टू बैट्समैन डॉट स्कोर 1 प्लस बैट्समैन डॉट स्कोर 2. आप डॉट भी लिख सकते हो, या फिर आप बैट्समैन के साथ फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो. सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, बैट्समैन टोटल इज इक्वल टू बैट्समैन. स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं होगी. सुमन सुमन ने जो लिखा है उसमें उसने जो शुरू में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं वो नहीं चाहिए. आप सीधा लिख सकते हो बैट्समैन डॉट स्कोर 1 प्लस बैट्समैन डॉट स्कोर 2. और अदरवाइज यू कैन राइट द वे आई एम राइटिंग है, जिसमें मैंने क्या किया है, बैट्समैन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में स्कोर 1 और फिर बैट्समैन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में स्कोर 2. सो दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ऑप्शंस विल बी करेक्ट. Display the highest score in both score 1 and score 2 of the data frame. हाँ जी. मैम मैं माइक ऑन करने वाला था, लेकिन पता नहीं इसमें कोई कुछ इशू आ गया था. मुझे एक चीज़ पूछनी है मैम. हाँ बोलो. मैम ये सेम क्वेश्चन, मतलब इससे सिमिलर क्वेश्चन आपने यूटी में भी दिया था, तो उसमें आपने बोला हाँ, था कि हाँ, ये एक आंसर है जिसमें मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है. वो कौन सा आंसर था मतलब? वो सेकंड वाले का था. Display the highest score in both score 1 and score 2 of the data frame. आपको score 1 and score 2 दोनों का हाईएस्ट शो करना है.
तो आप पहले तो सिर्फ उन दोनों को फेच करोगे। अब दो कॉलम्स को फेच करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डेटा फ्रेम का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि आप कॉलम्स को एज अ लिस्ट दे रहे हो। सो ऐसे लिखा मैंने, और इसके साथ क्या लगा दिया, डॉट मैक्स। सो ये जो मैंने अभी लिखा है, दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस। इसमें क्या होगा, बैट्समैन, पहले वो सिर्फ दो कॉलम्स को फेच करेगा, उसमें से स्कोर 1 और स्कोर 2 को। डॉट मैक्स से क्या होगा, दोनों कॉलम्स का मैक्स दिखा देगा कि स्कोर 1 का हाईएस्ट इतना है, स्कोर 2 का हाईएस्ट इतना है। So it will show you the score like that. So this is the right way to show the highest of both score 1 as well as score 2. And then finally we have display the data frame, वो तो print batsman हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? मैम ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट क्यों ये डाल क्योंकि रखे हैं? जब आप सिंगल कॉलम फेच करते हो तो आप बैट्समैन स्क्वायर ब्रैकेट और सिंगल कॉलम का नाम लिख देते हो डबल कोट्स में। बट नाउ यू आर फेचिंग अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स, सिंस इट इज अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड अ लिस्ट इज गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट तो इसलिए क्योंकि हम डेटा फ्रेम में से फेच कर रहे हैं, दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए क्योंकि आप लिस्ट ऑफ कॉलम्स को फेच कर रहे हो। टू स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ कॉलम्स वी हैव द सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स ओवर देयर। So this was the last question. ठीक है, so since it's a list of columns, we are putting it in the further square bracket.